स्लो क्यों हो गया इंटरनेट ब्रो? व्हाट द फक? Killing, killing. Program of the day. Sorry, problem of the day. क्या करना है भाई? Hard, what the hell? You're given an array of tasks where task of I is actual minus minimum. Actual task is like amount of energy you spend to finish the ith task, and minimum of I is minimum amount of energy you require to begin the ith task. Let's subtract this thing from this, then I get 1. So can't we just flatten the array and return whatever is coming? If I flatten my array, then will I get something like 1, 3, 2, 4, 10, 11 and 10, 12. After that, what we can do is like take 2 pointers and do the operations. For the first one, we will do like 1 minus 3, which is like 3. There is no 1 minus 3. Bullshit. Where is the 1 minus 3? Starting with the 32 energy, like from where did the 32 come, man? What the hell? We finish each task. We finish the task in the following order. First task. Now energy is like 32 minus 1. Second task, which is like 2. Third task. How are they getting 27 here? We were given an array of tasks where tasks of I equals to actual I, comma minimum of I. And actual I is the second actual amount of energy you spend to finish the ith task. Minimum I is minimum amount of energy the ith task. For example, if the task is 10, 12, your current energy is 11. Then from where?
energy will be 3. After finishing it, you can finish the task in any order you like. Return the minimum initial amount of energy you will need. Okay, let us see the topics. Greedy. Bullshit. I've reached the topic of trees, but I haven't reached the greedy thing. Greedy and dynamic programming and other stuff. Can't I just brute force this thing? What am I supposed to do? They have given me energy, I mean the task and the minimum amount of energy required to complete the task. So, so my task requires 10, but my minimum energy is like 12. Why I can't complete the task? Since this the amount of energy required to complete the task is bigger than the task of I, right? Then it should be in here, right? However, if your current energy is 13, you can complete this task and your energy will be 3. 13, like you mean 10 minus 13. However, if your current energy is 13, okay, so 10 minus 13 is like 3. So what are you saying? Like I can't subtract the 10 from 12. I mean 12 from 10. Your current energy is 11. So where the 11 is coming? What the hell? If I subtract these two things, will I get 11? Hell, I'm getting only. How is this even working right now? Yo, did I read the question wrong? I mean, you have to do it in some other way. Since I'm not able to find how, this part is clear for me, but here they got like how they're getting the 32 directly from. Did they subtract this thing? I mean, if we subtract all this thing, we'll take like 32. Same for all of them and the remaining and return payout to man. Will I get 32? I'm not even fucking getting 32. How did he even get 32 here? If we subtract this thing, we're getting minus 8. Starting with the 32 energy, we finish the task in the following order. First task 32 minus 1 is 31. Let me see, did he add all the energy together? Oops, it's more than what I thought. So how are they getting 32 here? I was supposed to subtract the uh, minimum amount of energy minus the task, right? So if I subtract them, I will be getting minus 8, which is completely wrong according to the question they have given. But if I add all the energy together, I'm getting 39, which is like
which is not even fucking equal to the 32. Are they adding the task timer? Ah, we're getting 31, pretty close enough, I guess. But I don't think that's the value they're using right now. Let me see for this thing. No, they are not getting. How the hell are they getting this thing? Do I need? Let me ask the AI for some hints, since I'm not able to understand the fucking question right now. Explain me the question. Don't do anything else. Don't give me answer. I think I need to give the test case as well as like I need to understand how they're deriving the thing. Uh, each task has two numbers, actual and minimum, which is like 10 and 12, which means you have at least 12 energy before starting this task. After doing it, you will lose 10 energy. That is what I thought. I think that's pretty close enough, I guess. So energy 13 allowed because 13 is greater than 12. Why I can't subtract this to about 3? 11 energy is not allowed because 11 is less than 12. So you must, okay, I should have at least 12 energy before I start any task. But we are having 12 energy before we start the task, bro. What the fuck? And not allowed because 11 is less than 12. So you're saying like the tasks need to be greater than my minimum value? I mean the energy value. No, opposite. Current energy must be greater than and equal to the task minimum value before you start it. For a task, actual and minimum energy required to start, actual energy lost after finishing. So the rule is like current energy is greater than equals to minimum. So the rule is current energy is greater than or equals to minimum. This is problem of the day, man. Like I'm not trying to solve any hard question since I'm fucking dumb to solve those things. Like they're they're asking me to learn greedy and stuff. So I don't know like greedy. Sorting is fine enough, but even array is fine. But I don't know fucking. I never learned greedy right now. Like I need to learn greedy. I haven't started learning greedy yet. You need at least 12 energy to begin. What the fuck is this? After doing it, you will lose 10. Like even if I lose 10, I will be left with 2, right? Why I can't do this?
Yeah, this minus thing. Fuck, bro. This is fucking. So 1 and 3. 3 energy to start, you lose 1. Fine. And 4 energy to start, you lose 2. And 11 energy start, then 12 energy to start, 10 lose. Then why are we not doing that thing? Even if I lose 10, I will be left with 2, right? So here you're saying like if it is 9 and we lose 8, we still left with 1. Your current energy must be greater than or equal to the task minimum value before you start. Even task minimum value. I was saying do I need to maintain a minimum value in this thing? The language is like JavaScript here. I'm I'm completely different from other people, man. Like most of the people go with the C++ or Java, but yeah, I'm doing in JavaScript. Your current energy must be greater than or equal to the task minimum value. Do I have to calculate the minimum? What is the minimum here? Current energy must be greater than what? Current energy must be greater than or equal to task minimum value. Current energy must be greater than or equal to the task minimum value. Yeah, this is greater than or equal to the task minimum value. Don't we have it like 1 must be the minimum value since we don't have any other lesser number as we can see right now here. And if you compare the 12 with the 1 which is literally minimum value and great, I mean lesser than the, what the hell is it saying, like did I understood wrong? Current energy is like, current energy is like 12 which is bigger than my 1 and this should work, bro. What the fuck is saying like I need to use 13 there? Show the LeetCode profile. I don't have anything on my LeetCode profile, man. There is no shit here. Why you people want to see my LeetCode profile here? I don't even have anything here. What do you want to see here? Oh, this thing, yeah. I think last time I attended like only one question, I guess. I did only one, bro. What the fuck? It's telling me like two? How did I do two? I didn't do two. Is this the last one or like this is the last one? I don't think I did two questions. I did only one question which was easier one, like something related to simulation, I guess. What do you want to say here? Nothing is there. Okay, back to the question. You need at least 12 energy to begin, and after you lose, which is 10, current energy is 15 allowed, current energy is 12 allowed, current energy 11 not allowed. Oh, you're saying that if the task is completed, the energy shouldn't be left or what? How is 12 allowed but 11 is not allowed? Since 11 minus 10 should be like 1, still we are left with the 1 energy. Are we supposed to carry the energy to the next thing? You have to. Can't do the carry thing, right? They haven't mentioned that thing, but I think we have to carry the energy if it is left. That's how they are getting like 32 here, I guess. What the fuck? I'm not even able to understand the question right now. Your current energy must be greater than or equal to the task minimum value. Then why I can't do 10 minutes 12 minutes 12 minutes 10 whatever.
Yes, the minimum task as you said should be less than the current energy, right? Current energy, yeah, current energy of ongoing task, right? Then why can't we do that? Uh, this thing, like then why this won't work? Explain. Don't. Arey bro, what the fuck, yeah. What the hell, bro? What was the question? Even this thing gets subtracted from here, like you are still left with the one, right? One energy is left already, and this should be separate thing, and this should be separate. Then if I subtract this thing, I will be getting two energy left, still which is bigger than that. Even for this, we will be left with the one. Bro, is the question is hard? Like, is the question hard, or I can't understand the question right now? I don't think question is harder. Understanding the question is becoming harder for me right now. What are they trying to imply right now? If you start with anything smaller than 32, it becomes impossible at point. How did you come up with a 32 then? Like, could you tell me like how do you 30? What the hell? Why can't I even do this? First subtract this thing from this. They're getting 8 or they're not getting 8. If you're taking the 8 from here, like the energy from this thing, whatever is required to complete the task, and here I can't even see any 32 here, or like I can't even see any 27. But when I add all the energy together, I'm getting more than what you have given me here.
And when I even add the tasks together, I'm not getting the same value. Like, how did you determine like I will start from 27 or like the 32 point? I don't know like how that. Notice even though we have leftover energy starting with this 7 energy does not work because we can't do the third task. Holy shit. This question is driving me crazy. Starting with the 8 energy, we finish the task in the following order. For the 8 energy, what you did is like you subtracted this thing from this thing. This is, we're only getting 7, man. Like, how are you getting output as 8? 4,000 people doing this problem right now. Crazy. How dumb I am, bro. What the fuck? I can't even understand the question right. Is it because of hard question or like didn't even I understand the question? Both can go till 10 to the power of 500. Or the number and something. Once I understand how the 27 came here, then I could do some brute force thing. But I'm not able to come up how they are getting 27 or 32 and this fucking 8 here. 4 plus is a pretty bigger number if I add all the energy. And are they taking the highest number of energy? That was the point, then they would have gone with equal, which is the highest one here. But still they're getting like 32, which is like out of the scope here. Right? And even for the 27, don't see if you add all together, then you'll be getting like 21 or something. I don't know. 29. There is no possibility of getting 27 out of. Do I have to know some formula for this thing? I don't. They have given me like arrays greedy. What is greedy? Is this some kind of algo? Shit. A greedy algorithm is a problem solving strategy that makes locally optimal choice at each stage, which is the hope of finding global optimum. What the fuck is this? You mean I have to find the local optimal at every stage and be in hope that I can find something better in future? Backtracking, damn, I don't know fucking backtracking. I have not reached the topic yet. I think I am on trees right now. Alright, let me share this question to my people on the Discord. Like, they might be able to crack this shit. I'm fucking down. If I subtract this thing from this,
We'll be left with 2, and again we'll be left with 2, and 1 here, and 2 here. Like, what is the problem then? Minimum initial energy to finish task. Fucking greedy, I don't know. So are you saying that I can't complete the task because I have only like 12 energy left and my task is like 10? But I'm still left with the 2, man. What the fuck are you saying? Why is the difference between like 1 here? I can't understand. Like, can't start the task. However, if your current energy is 13, then you can complete the task. So what the fuck? 12 is greater. I mean, 12 is greater than 10, right? What the hell is this, bro? Actual I is the actual amount of energy you spend to finish the ith task. So the current task, this is the total amount of energy we spend. Yeah, and so we have energy which is greater than the task thing. So this is possible. And why is this thing not working? Am I thinking only in one perspective right now? What the hell? Bro, I just need to know how the 32 came here. Just explain how 32 came. No answers, nothing. Just a question. The key idea behind the answer 32 is like making sure you never violate any task minimum requirement at moment you start, while keeping the energy decreasing after every task. Here is the intuition using your example. The total energy loss is like 31. Are you saying that like if we add all the energy together, then we'll be getting 31? So at the very end, you will always end up with the 31 starting energy. Now look at the hardest constraint task 10, 12. You must have at least 12 energy before starting a task. The hell is this nigga saying? So the problem is not the total loss. It's at the some point before reaching the task, your remaining energy might drop below 12 depending on the order. What if I fucking sort the thing? It doesn't matter since it's inside another array. I think this is 2D array, right? Even if I sort this thing, this whole thing will come up here. I think I have already sorted it. No, this is not sorted. So where we are, where did we leave? Okay, the hardest constraint. So the problem is not the total loss. It's at some point before reaching the task, your remaining energy might drop below 12. And depending on the order, even if you arrange the task optimally, there will be moments where you have already spent most of energy and you still need to enter the task demands a high minimum entry energy. So you need just enough extra buffer above the total loss 31 so that not even the worst moment you can still meet the entry requirement. So the extra buffer turns out to be 1. Then what's the fucking point of giving the energy, bro? What the hell? You're saying like I have to just add up the number to satisfy the energy thing, but they have given me the fixed constraint, right?
Even though if you add up all the energy together, we won't get 31, I guess. I don't know. Are we getting 31? I think we'll get 39. Calculate the energy and spent on total energy spent. Don't give answer. Just what the hell? 21. Holy shit! Why are we not even executing the task in order? We start from the fifth task directly. What the fuck? Why did we even start from fifth one? Starting with the 27 energy, we finish the task in the following order. Yo, it doesn't matter, right? If we have 27 left, even if we change the order, I don't think the output will be getting affected by that thing. So no matter where you do, 27 going to be calculated as the same way when you calculate everything together. I think I think you can return in any order, I guess. You can finish the task in any order. Okay, there we go. And how did you determine like you can add up to 27? Let's see. So he told me like the key idea behind answer is 32 about making sure you never violate any task minimum requirement at moment you start it, while energy keep decreasing after every task. Okay, so this is what we gave, right? If we add up all things together, we get 31. Isn't the 31 enough to complete all the tasks? Bro did not even log in to ChatGPT. Yep. All right then. Uh, calculate how much is left. Um, but 31. I mean, it's already 31. I know. Why not 31? Current energy must be greater than or equals to minimum mass. So if the total is 31, the problem is like you might reach the task too early, and when your energy is still too low, you might reach the task too early. I was supposed to return the minimum, so I have to go too early, bro. What the fuck are you saying? Why 31 fails for your input? Even if you try smart ordering,
you still hit the issue. You must eventually do tasks with a minimum of 12 and 11. By the time you reach them, your energy may have already been low because you already spent 19 total energy before it even getting there in the best case. So possible is, can 31 cover total cost? Can you always stay above the required minimum at the moment you reach each task? 31 gives no buffer at all. So at the critical task, you fall below its required starting threshold. 31 just enough to pay our cost, but the tasks also have entry fee minimums. You need extra energy so you never hit the entry fee balance too low. Oh, ये max वाला है क्या? Dis discrete max. Discrete max. What the fuck is discrete? Discrete. भाई इसको spell कैसे करते हैं? Discrete बताओ. Discrete mathematics. Discrete. ओ हाँ यार, यहाँ पे देख क्या नाम है उसका, कोडिंग नहीं मिल गया, नौकरी भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं है ब्रो, व्हाट द फक मैं क्या करूँ? यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, मेरे को लगा भाई अब मेरे को कम से कम एक उस वाले पढ़ने पड़ेंगे जो भी मतलब टाइप सेफ्टी के साथ में आते हैं, जैसे कि इधर इट कैन बी C++ या फिर जावा, पाइथन भी तो जावा करने पड़ेंगे। ये क्या टाइम, मेरे को लग रहा भाई मेरे फर्स्ट मेरे को DSA करनी पड़ेंगे एंड उसके बाद में अगेन हैव टू लर्न अ लैंग्वेज एंड उसके साथ में मेरे को जाना पड़ेगा, इट कैन बी इधर जावा या फिर C++ कर सकते हैं सिंस मैंने रेलिप वगैरह थोड़ा बहुत किया था तो लाइव स्ट्रीम में, तो थोड़ा बहुत सिंटैक्स मेरे को याद है, मैं कर सकता हूँ C++ में, बट DSA वाइज मेरे को नहीं हो पाता फिर से, उसके लिए मेरे को अलग से फिगर आउट करना पड़ेगा क्या यूज़ करना है, क्या किधर है, एक दिन पूरा मतलब C++ का करूँगा एंड उसके बाद मेरा क्लियर हो जाएगा। क्या इसके लिए मेरे को मतलब ग्रीडी सीखना पड़ेगा एंड मैथ्स वगैरह क्या? हाँ भाई 31 है, इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को कितना चाहिए, अगर मैं इसको सबक करूँगा मेरे को 2 हो जाएंगे एंड इसको करने के लिए ओ फक यहाँ पे ही मेरा एनर्जी सब डाउन हो जाएगा, मतलब नहीं यहाँ 2 विल बी हियर, ओह शिट, बट यहाँ पर 11 है ना तो ये मतलब इसको तो कैंसिल आउट कर सकता है, 1 लेफ्ट रहेगा, स्टिल वी विल हैव 2 हियर एंड इधर भी एक रहेगा, बट ये क्या बोल रहा है कि मतलब हर एक लेवल पे जब भी जाएगा तो मिनिमम तेरे को उतना रहना चाहिए, ये तो गांड फाड़ रहा है भाई क्वेश्चन में, क्या चीज़ क्वेश्चन है, घंटा ना समझ में आ रहा भाई, मेरे को लगता है क्वेश्चन सीखने के लिए मेरे को अलग से पढ़ना पड़ेगा। चल इसको गोली मारता हूँ अभी, क्या टाइम हो रहा है, मैंने बहुत देर इसमें टाइम वेस्ट कर दिया ब्रो, व्हाट द फक, मैं वापस आऊँगा इस पे कुछ दिन के बाद, आऊँगा ग्रीडी सीखने के बाद तेरा तेरा फाड़ूंगा मार के साथ। क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा, व्हाट द फक, ऑथ एक्सपायर हो गया क्या इसका, वो टोकन एक्सपायर हो गया यार, मेरा पासवर्ड मत देखो भाई, पासवर्ड मत देखो यार, दिल से बुरा लगता है ब्रो।
अबे रेंज दो ही सब्सक्राइबर चाहिए, 300 हो जाएंगे उसके बाद बैन हो जाएगा लॉल। 2 सब्सक्राइबर भाई, उसके बाद में मेरा चैनल बैन। मैं कुछ तो कर रहा था, हाँ इसको डाल रहा था इसमें, लर्निंग में डालूंगा। ना 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 ना, क्रिएट न्यू लिस्ट, सॉल्व लेटर, सेट एज प्राइवेट, मेरे को दिखाना बस, मुझे सबको दिखाता हूँ। And I will be back to this question once I learn the greedy thing, fucking greedy. And I wasted too much time on thinking that thing. Um, अबे ट्री किधर है? ये ट्री है, ये ट्री नहीं है, ये ट्राई है, ट्राई है। Is this tree? This is not tree, right? Where can I find the tree? DFS, BFS. Let's go with the smaller thing right now. उसके बाद में we'll go symmetry. बीच में नल घुसाना जरूरी था क्या? यार ये रूट है एंड पैरेंट नोड, ये उसके वो सेपरेशन करने वाला है, ये भी है। हम्म, हम्म, हम्म। Can go till 100. If my root dot left, I think we can consider, I guess. Well, my current is there, dot left. Since we're doing well, not of current and node dot bar equal equals right, and then let bar right node and left node dot val and right node dot val. If they are equal, and if they are not, crash now. Come on, crash it faster. You're getting undefined. Interesting. What did I do?
until my current is there. Until my current is there, when you take for this left and right. If how do you put this thing? This is a good one, right? If it is there, then only do that thing. Oops, we are getting undefined. Why my current is there, then you do this thing. What the hell is wrong? Is my traverse function wrong or returning? Hmm. Is this getting stuck in infinite loop? If it was getting stuck in the infinite loop, it should be returning TLE, I guess. What is wrong here? If this is there, then return true. This is because of flag. Let me return the flag outside then. Maybe I'm just reading in section not. There we go. Flag is not defined. Okay, let me define this thing outside then. Come on, throw some errors. Okay, one got success, I guess. And what was the mistake here? So this should be working since this is what I was trying to do here. If my left node is there and current dot left, current dot right, current left node dot val, if val is right, val. Oops. Left node dot current dot right node dot current dot val equals to right node. Mm-hmm.
recursive function is supposed to return, right? Recursive function is supposed to return. Why are we getting spots here? Is this because of the flag? Am I supposed to pass the root node or like something else? So we have the root here. Uh, since we are passing the is symmetric the root thing and the current will be root, flag is false. Let me remove it. And traverse root element current is root. Okay. Why am I repeating this thing? While my current is I can't simulate it. Current is current, current. If there is no left and right, then it is symmetric, I guess. But this thing, I don't need this current thing right now. You can only keep the conditional. Let's remove this thing. Don't even need the value. If this is true, then return this thing. Have to define. Let left node equals to current of left equals to. If it is there, then only put this thing. Instead of passing the root, pass the left node and make the compound. If no left node or right, then true.
If my left node is there and left node val is there, then you return. And you can even keep for the false thing. If this is there, well, left node not there and right node there, or left not right node value is not present, then false. Left node or right node is not there. Instead of and, you can or right node dot val not equals to left node dot val. Then return false. Now we have to pass this thing. This is the important thing. How do we pass this thing now? We have to pass the left and right. Left, right. We have left and right. Okay, we have left and right. I think this should work now. Now we are returning everything inside itself and then return the traverse. So if we return this thing, whatever the output comes, it will return outside, I guess. I haven't set it up. Like, will this thing go outside or like we have to put it inside? I can't put it inside since I'm taking them in here. Let me run first. Because we're getting undefined. Why? Why am I getting undefined? Current dot root current is not there, then return true. If left node is there here. What is wrong? What is wrong? If my current node is not there, and right node is not there, then this thing or this thing. If right node is not here and current node is not, and right node of R is not there, should be left node. Then this only if my left node is there, but R is there and left right node is there. Do I even need this condition? Something interesting happened right now. Okay. Something. Should be at least getting false, right? Oh, I think so. Okay, what is the issue now? Didn't return it properly. The return is return as it's supposed to be. Okay, this is supposed to be dot. Still getting undefined. What the fuck, bro? Why the messages are not coming? I think this is not the YouTube chat. Did anyone send some messages? I don't think anyone sent messages. I think this is not the YouTube chat.
व्हाट द फक भाई, इतने लोग क्या मैसेज कर रहे हैं। हाँ लॉल भाई। अनसब करता हूँ, अरे यार। और एक सब्सक्राइबर हो जाएगा, गेम खत्म ब्रो। अबे कॉपीराइट आएगा साला। भाई कहाँ पे मिस्टेक कर दिया भाई, मेरा ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, व्हाट द फक भाई। ट्री में तो सब सही दिख रहा है मेरे को। तो फर्स्ट आई हैव सीन द लेफ्ट नोड एंड लेफ्ट में करंट। में चार्ट दिख रहे हैं। यो तौर भाई, क्या हाल चाल भाई, बहुत दिन बाद आया भाई। कैसा है? और भाई गर्लफ्रेंड वगैरह कैसी है? क्या बोल रहा है, कॉपीराइट नहीं आएगा? अच्छा वो बुक के लिए। वो बुक के लिए बोल रहा है। भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा, व्हाट द फक। ये तो करना चाहिए था इसको। अबे इसमें गलत क्या है बता मेरे को, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो तेरे को समझ में आ रहा है, क्या बताया मेरे को। भाई तू तो प्रो है वैसे। यहाँ पे देख, करंट में रूट को स्टोर कर लिया, या फिर डायरेक्ट रूट ही दे दूँ या ऐसे स्टोर करने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। अगर मेरा करंट नहीं है तो फिर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना ही वो राइट वाला नोड है या फिर लेफ्ट वाला नोड है, तभी मतलब मेरा नल होगा। अगर मेरा करंट का लेफ्ट है एंड करंट का राइट है, तभी मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ एंड ट्रैवर्स में पास कर रहा हूँ। अगर मेरा राइट नोड और लेफ्ट नोड नहीं है तो मतलब हाँ, दोनों मतलब एम्प्टी है, तो फिर मतलब ट्रू है। एंड अगर ये राइट नोड भी नहीं है, लेफ्ट नोड भी नहीं है, और फिर राइट नोड का वैल्यू लेफ्ट नोड का वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो फिर फॉल्स है। देख लिया, बुक देख लिया, बुक देख लिया ब्रो। ऐसा कौन मोटिवेशन करता भाई। क्या ये राइट और लेफ्ट का दोनों का जा नहीं रहेगा, मेरे को ये डाउट हो रहा है अभी। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ब्रो, ड्रॉ करते हैं, लेट्स गो। ड्रॉ ब्रो, ड्रॉ। ड्राइंग। ना ना ना, ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करूंगा साथ। इसको और भी करता हूँ भाई। फर्स्ट मेरा कंडीशन के हिसाब से ये रूट है। मैं सिंपल लिखूंगा, प्रेजेंट। भाई प्री लिखता हूँ भाई, समझ जाओ यार। प्री लिखता हूँ, प्री। आलसी हूँ। प्रेजेंट है ये, वन प्रेजेंट है, मतलब रूट प्रेजेंट है। एंड इसका लेफ्ट भी प्रेजेंट है, राइट भी प्रेजेंट है। तो फिर क्या कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट है तो फिर किधर गया वो। इसके यहाँ इधर आ तू। अरे चैट भी देखना, फोन में खोल देता हूँ सबसे बेस्ट। तुम लोग का मैसेज तो उधर ही आएगा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट चेक कर ब्रूट फोर्स से होगा कि नहीं। अच्छा ब्रूट फोर्स है ये, रुक। रिकर्सिव लगाया हूँ भाई, रिकर्सिव लगाया हूँ। ब्रूट फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ मैं, रिकर्सिव। रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन लगाया भाई, हलवा थोड़ी है। मैंने आज ही सीखा था कैसे करना है ये, क्या क्या होता है। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, भाई क्या क्या था भाई, सारे देखा बैठ के। थोड़ा बहुत समझ में आया, बट आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर मेरा राइट एंड करंट है तो फिर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ लेफ्ट में, फिर राइट में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स में पास कर रहे हैं, ट्रैवर्स में पास किया। ट्रैवर्स में क्या हो रहा है,
लेफ्ट नोड है क्या? हाँ लेफ्ट नोड है। राइट नोड है क्या? राइट नोड है। तो ट्रू अगर है तो फिर मतलब कंटिन्यू करेंगे उसके बाद में, अगर ये सब नहीं है तो फिर ये जाएगा। अगर है तो फिर उसका लेफ्ट नोड का लेफ्ट, लेफ्ट नोड का लेफ्ट एंड ये क्या था, फिर क्या है? राइट नोड का लेफ्ट, राइट नोड का राइट, राइट नोड का राइट, राइट नोड का राइट। तो इसका कौन चेक करेगा भोसड़ी? ओ क्या मतलब और एक कंडीशन लगेगा यहाँ पे, अलग से एक और डालना पड़ेगा क्या मेरे को? लेफ्ट नोड डॉट राइट नोड डॉट लेफ्ट। अब इसका भी, अब इसका भी हो रहा है राइट नोड लेफ्ट नोड का राइट एंड राइट नोड का ये। अब थिंक आई थिंक दोनों का कंपेयर हो रहा है अब। पता नहीं यही इशू था क्या, देखता हूँ। अभी रिटर्न करने के टाइम पे ऐसा कर सकते हैं ना, या फिर अलग से करना पड़ेगा इसको? एंड करके भी रिटर्न होता है ना? दो दो रिकर्सिव फंक्शन नहीं कॉल कर सकते? मेरे को आइडिया नहीं ब्रो, लेट्स सी। दौड़ लग गया भाई मेरी, डिफेंड क्यों आ रहा है बहुत सारी इसकी। और क्या हो गया भाई, और दफा किया क्या है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये क्या आ गया, ये ऐसे भी दिखता है क्या? और दफा अनडिफाइंड क्यों आ रहा भाई? कंसोल डॉट लॉग करो करंट को, करंट क्या आ गया? या फिर लेफ्ट एंड राइट नोड नहीं है? तो चैट देखना पड़ेगा, तुम लोग क्या क्या भेज रहे हो, मेरे को दिख रहा भी नहीं। सेकेंड बी रेडी ड्रॉ द क्वेश्चन इटसेल्फ। हाँ वही कर रहा था भाई, मेरे को ये पता चला कि ये मिसिंग हो रहा है सारा। आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ है मेरा। तो रुक जा भाई, ये मामा से पूछता हूँ, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मेरा आंसर ना बता दे साले ये मेहनत सारे बेकार देंगे। क्या बात कर रहा है? यू नेवर कॉल इट रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम एसिमेट्रिक, व्हाट द फक क्या बोल रहा है भाई? रिटर्न तो कर दिया, एंड ऑफ एसिमेट्रिक। saying I have written this thing. Shut up my function, but function is supposed to call it inside, right? Recursive का क्या लोचा है यार ये? ऐसे तो काम नहीं करेगा, काम करेगा दफा ये काम कर रहा है। अभी अनडिफाइंड कर रहा बढ़ गई। मेरा करंट क्यों प्रिंट नहीं हो रहा दफा? अच्छा ये प्रिंट हुआ करंट है तो भाई सारे हैं। कहना क्या चाह रहा है ये? फिट हुआ। अरे ये तो रिटर्न करेगा ही अंदर वापस में, तो इधर रिटर्न रूट तो नहीं दिया मतलब करंट।
ये तो अंदर में चेक हो रहा है, अभी बाहर में तो चेक करना पड़ेगा, यही है क्या? अब तो मैं दोनों जगह पर रिटर्न कर रहा हूँ, फिर भी ये हो जाएगा, ये होगा। यही होगा ना पड़वा, समझ नहीं आ रहा। Where is the final Boolean result going? Re Final return drivers at the end of this symmetry. You assign left and right node, but you never use them outside the helper call. Make sure your recursion actually start. मतलब ये अंदर जो मैं कर रहा हूँ ये तो इससे रिकर्शन हो ही नहीं रहा है इसमें। मतलब हो रहा है बट आउटपुट बाहर में नहीं आया तुम। अगर ये होता नहीं है, अगर मैं इसमें हटाऊंगा कोड फटना से सिंगली द फैक्ट, मतलब मेरे को लेफ्ट एंड राइट सब चेक करना था, फालतू का एंड एंड लगा रहा था। अब ये कोड ब्रेक होना चाहिए भाई। आई थिंक ये लेफ्ट एंड राइट मिसिंग होगा, इसके लिए प्लीज को डालता हूँ। तो ये सब नहीं चाहिए डायग्राम वगैरह। यस, सेकेंड वाला के लिए कैसे काम कर रहा है, कुछ भी बचा 2% क्रेजी, सबसे लोवेस्ट है। लोगों ने मतलब कैसे सॉल्व किया इसको? अबे ये क्या बोलते हैं, इसमें ये रिटर्न नहीं किया था मैं, लोल ड्रोल लोल लूल हो गया मेरा लूल। अच्छा, इन लोग ने कैसे सॉल्व किया, मैं इनका सोल्यूशन देखता हूँ, कुछ आइडिया आ रहा है क्या इनका देख के। ये क्या बनाया? अच्छा मैं समझ गया, दो अरे बनाया और फिर उसको कंपेयर किया, ये बड़ा भाई। ये पता था मेरे, ये करने के लिए सोच रहा था मैं, फिर मेरे को याद आया कि हाँ मैंने रिकर्शन का कुछ सीखा था ट्री के साथ में, थोड़ा ट्राई करते हैं उस टाइप का। मैं अरे वाला कर सकता था बट वो इतना स्पेस लेगा, ओ ऑफ एन जितने 1000 तक जा सकता है ट्री का जो भी साइज है। तो मतलब 500 500 कर ले, 500 500 तक तो स्टोर होंगे, ओ ऑफ एन लेगा एक स्पेस, ओ ऑफ एन ये भी एक लेगा, एन स्क्वायर हो जाएगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ऊपर से ये भी एक रन करेगा ओ ऑफ एन तक। एंड और कुछ लूप लगाया गया इसने, या ट्रेस लेफ्ट ट्रेस राइट का क्या किया है। अगर मेरा ब्रांच है तो फिर ब्रांच पुश कर दो, चाहे वैल्यू पुश करवा रहा है, सही है। ये भी सही है बट ये कहाँ पे आया है इसका, क्या इसका जाते जगह पे आ गया, मेरे से एक स्टेप आ गया इसका। नहीं ये तो कोई और बनना था, ये था ये, दो स्टेप आ गया मेरे से। इसने क्या सही है, व्हाट द फक ब्रो। अच्छा इसने मेरा मेथड ही किया बट थोड़ा बहुत अलग अलग किया, पता नहीं। लेफ्ट एंड राइट नहीं है तो लेफ्ट एंड राइट नहीं है, लेफ्ट एंड लेफ्ट क्या किया भाई इसने, इफ नॉट ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिटर्न कर दो, नॉट ऑफ लेफ्ट कर देता है। अच्छा ये बूलियन कंडीशन देता हूँ शायद, रन करके रिटर्न, अगर ये ट्रू है तो फिर ये है, वरना फिर मिरर में जाओ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करना। अच्छा ये मैं मिस हो गया इसकी। अच्छा ये सोल्यूशन था क्या? भाई इन लोग ने तो वही किया भाई, मेरा क्यों कम आ रहा है इतना, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। वापस सबमिट करूंगा तो मेरा 100 हो जाएगा, मेरा 4 कैसे आ रहा है, 2 हो गया भाई दफा। इतना मतलब मेमोरी 58 MB लिया मतलब 15 मिली सेकेंड लगे चलने के लिए, काफ़ी स्लो है वो तो। मैंने तो रिकर्सिव किया फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा भाई, ये तो मेरा सोल्यूशन था ही नहीं, ये क्या है, ये उसका है क्या, तो इसका भी नहीं था। ब्रो लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन पीपल हैव देयर आई गेस। 0 ms fully explain Java, JavaScript है, फिर JavaScript।
Bro, you're doing the literally the same fucking thing what I did. But तुम्हारा हो रहा है मेरा क्यों नहीं? And मेरा मेरा क्यों मतलब उतना आ रहे हैं? Is it because of this land? So इसकी वजह से हो रहा है। कंसोल लॉक की वजह से हो रहा है बड़ा। अब आएगा भाई 50% जाएगा आई थिंक। ऑन लेट्स गो। लेट्स गो ब्रो, दिस इज व्हाट आई पता था कुछ तो गड़बड़ है। कंसोल लॉक कर रखा था इसलिए टाइम लग रहा था उसको आने में मेरा। ये क्या सही चेक करने भाई। एक क्वेश्चन में 5 सबमिशन करता हूँ, क्या गंदा बन। चल अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी वैसा ही है क्या? सेम ट्री मतलब? ओ दो दो दिए हैं इस बार। पर दिस इज सेम फकिंग क्वेश्चन ब्रो, ये नहीं करना। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। अच्छा वेट है। Return the longest path from the root node down to the farthest farthest again. Farthest 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 sorry farthest farthest I think is क्या भाई। तो मेरे को क्या करना है पहले? मेरे को जितने एलिमेंट आएंगे, सॉरी जितने जितने बार मेरे को वैल्यू मिलेगा मैं उसका नोट डाउन करूँगा लेफ्ट एंड राइट का। एंड जहाँ से मतलब अरे क्या बोलूँ, हाँ करते रहूँगा वो। Let me draw XCOM. Yo, don't say answer, don't say answer. Please don't say answer भाई। अरे वही करने वाला था यार, तू बता के दे रहा है। मैं क्या करता है कि इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको एक वैल्यू तो एक ही वैल्यू से तो रूट स्टार्ट होगा। एंड फिर ये लेफ्ट आएगा यहाँ से। लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो लेफ्ट जैसे एक लेफ्ट में एक वैल्यू मिलेगा, मैं काउंटर को प्लस कर दूंगा, एक काउंटर लेफ्ट का काउंटर प्लस हो जाएगा। उसके बाद मैं राइट में आऊँगा, राइट में देखूंगा। अच्छा राइट में 20 है फिर उसके उसके उसमें लेफ्ट है क्या? उसमें लेफ्ट है, फिर एक वैल्यू और बढ़ेगा तो राइट का 2 हो जाएगा। और फिर राइट का और एक हो जाएगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो 3 आंसर है। स्टाइगर पगलू, स्टाइगर भैया। अरे मैं स्टाइगर थोड़ी हूँ भाई। भाई उनके साथ कंपेयर मत कर भाई, वो तो लेजेंड है भाई साहब। मैं तो नुबड़ा हूँ। नुबड़े लोग तो मतलब कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो तो गॉड लाइक है भाई। अब मेरे को ट्रैवल्स करनी है, क्या करूँगा? रूट में क्या लेफ्ट है? मैं इसका मैं इसका पहले कोड लिखता हूँ कैसे करूँगा। पहले फर्स्ट में चेक करूँगा रूट है क्या। रूट है तो फिर ठीक है, वरना फिर रिटर्न लेफ्ट। कुछ करना है क्या इसमें? और से नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है, बस रिटर्न करना है। अच्छा रिटर्न करूँगा तो फिर वापस आएगा अनडिफाइंड करेगा। तो -1 कर देता हूँ अभी के लिए। एंड अभी अपने को एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन रिकर्सिव रिकर्सिव में ट्रैवल्स लिख देता हूँ। सदा ट्रैवल्स ही कर रहे हैं। इसमें रूट को पास कर देंगे, रूट में पास हो जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या लेफ्ट लेफ्ट नोड
इस डॉट है तो ठीक है। अगर ये है तो फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को ट्रैवल्स करनी है। What is this maximum depth, right? Okay, I have to some similarity between them, so I just need to find the longest whatever is getting. हाँ, दो दो ट्रैवल्स चला सकते हैं। एक तो एक सेकेंड, मेरे को राइट एंड लेफ्ट पास करना है क्या? अगर मेरा लेफ्ट है, और ओके ओके ओके, अगर मेरा लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट नोट डॉट डाल। नल मतलब एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा तो मतलब है। अगर मेरा लेफ्ट नोड है एंड इफ माई, अरे मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ ना, तो मतलब जावा से कर रहा था तो मतलब कंटिन्यू कर दिया। मेरे को सी प्लस प्लस सीखना है। अगर मेरा लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, तब मैं यहाँ पे एक काउंटर लेफ्ट लेफ्ट काउंटर। अगर मेरा ये है तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट काउंट प्लस प्लस कर देंगे। एक सेकेंड, लेफ्ट नोड में लेफ्ट नोड का लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट नोड के लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड में वैल्यू है, तो मतलब ये राइट एंड लेफ्ट का दोनों का चेक कर लेगा अपने आप, या फिर मेरे को पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम चेकिंग फॉर द राइट वन एंड लेफ्ट। ये ट्री का क्वेश्चन है। तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, लग रहा है क्वेश्चन में। ये कहाँ से है? अच्छा ये इसका है ना, इसका है। if block closing है ये चाहिए राइट में होता है ग्रेटर देन जीरो, राइट काउंट प्लस प्लस। एंड अभी अपने को रिकर्शन का वो देखना पड़ेगा कैसे करना है, तो भी रिटर्न करेंगे। रिटर्न प्लस वन भी करना है, प्लस वन का। मैंने यही सोचा है, क्या ये सही है क्या, बताओ तुम लोग। मेरा माइंड में यही आ रहा है, बट इसको मैं रिकर्शन फंक्शन में लिखना है या फिर मतलब कैसे लिखना है, ये तो सोचना है। आई डोंट थिंक ऐसे डायरेक्ट लिखने से आ जाएगा।
या फिर जब तक मेरा रूट है तब तक मैं ऐसे ही ट्रैवल्स करते जाऊँ, ऐसे ही डायरेक्ट आइटरेटिव मेथड में। इंट्यूटिव इंट्यूटिव लगता है, रिकर्सिव इंट्यूटिव लगता है। आइटरेटिव में मेहनत है, ओ वो तो मेरे से ना हो पाएगा। मैं तो यहाँ पे ऐसे कर रहा था, रूट चेक कर रहा था। रुक जा, जो भी हम उधर लिखे थे उसको यहाँ पे लिखा था पहले। अगर नहीं है तो रिटर्न जीरो कर देते हैं। चालू कर दो मेरे को। अगर मेरा लेफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे ही हम लोग मैक्स डेप्थ को ही मतलब ये बना सकते हैं ना। रूट डॉट लेफ्ट है फिर, एंड इसका ही इतना छोटा कैसा हो गया। और अपने को बस रिटर्न करनी है मैथ डॉट सॉफ्ट। लेफ्ट जो आ रहा है, राइट जो आ रहा है, ऐसे कर दूँ वन या फिर पाँच, तो सेम ही होगा। इसको कैसे फंक्शन बना दिया। ये चलेगा क्या? हाँ चल गया। यार 47% कैसे भाई, अच्छा ही तो है, मतलब और अच्छा भी लिख सकते हैं लेकिन पता नहीं इन लोग ने कैसे किया। अच्छा, ये आइटरेटिव मेथड लगाया था, पता नहीं मैंने। मैंने आइटरेटिव मेथड का अपना मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो उसमें क्यू एंड स्टैक वगैरह लगता है, पता नहीं। तो इसने क्या किया, स्टैक में रूट को डाल दिया, तो स्टैक इसलिए लीक हो रही है। यस, लीक होता है। एंड काउंट में जीरो लिया, एंड क्यू डॉट लेंथ, like whenever is q dot length there and count plus plus happens and sub q dot length और डबल वाइल लूप लगाया भाई, ये तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या बोलते हैं इसको। अगर डबल लूप लग जाएगा तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। लेवल ऑर्डर ट्री, और लेवल ऑर्डर वाला मैं अभी तक किया नहीं है। ऐसे ऐसे आता है ना, रुक बताता है वो ऐसे ऐसे आता है ना। ब्लैक ब्लैक पेन की जगह वो ऐसे आता है ना, एस किया था थ्री, ये ऐसा आता है ना ये, लेवल ऑर्डर वाला। या फिर ऐसा आता है, ऐसे ऐसे आता है ना, लेवल लेवल थ्री आएगा, फिर 920 आएगा, फिर 15 7 आएगा, ऐसा है ना। मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देखा था कैसे ट्रैवल्स वगैरह करते हैं, एंड कैसे रूट तक जा सकते हैं, कैसे फिर वो करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक देखा है थोड़ा बहुत। इसने भी तो वही किया भाई, मतलब इसने यहाँ पे सम डाल दिया, इसकी वजह से इसका ऐसा हो गया, तो फिर मैं इसको बाहर बढ़ा दूँगा, आई थिंक और इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे दोनों तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं, पता नहीं कैसे इम्प्रूव। अब सबमिट करने पे आई थिंक 80% होना चाहिए, तो 100 हो। तो मेरा मैंने एडिशन मैंने यहाँ पे किया, इसकी वजह से इतना स्लो हो गया। और यहाँ पे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं।
इसको लिखने के लिए कितने तरीके हैं भाई, यहाँ पे देख। अगर ये आ गया उसके बाद में तो यहाँ पे भी लाइक लेफ्ट लेफ्ट प्लस कर सकता है, राइट लेफ्ट वन प्लस कर सकता है, या फिर रिटर्न में भी लाइक यू कैन डू प्लस वन हियर, और इधर यू कैन ऐड वन हियर, और यू कैन इवन ऐड वन हियर। कितने तरीके हैं भाई साहब। ब्रूट फोर्स में इसको कैसे करते हैं यार? ब्रूट फोर्स में कोई किया होगा क्या? सब लोग मतलब रिकर्सिव सीख लेते होंगे एंड रिकर्सिव में करते होंगे, क्योंकि आइटरेटिव थोड़ा हार्ड होता होगा। डीएफएस, ओके डीएफएस में प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर और बस इतना ही आता है। बाकी उसमें लेवल लेवल ऑर्डर वाला उसमें आता है ना बीएफएस में। वन वन इज टू टेक द डेप्थ ऑफ लेफ्ट साइड एंड अदर इज टू टेक द डेप्थ ऑफ राइट साइड। कम से कम मेरा दिमाग काम कर रहा था थोड़ा बहुत, मेरे को मजा आया। एक क्वेश्चन लेके बैठा था भाई, प्रॉब्लम ऑफ द डे था कुछ, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। 32 ले रहा, 27 ले रहा, कहाँ से ले रहा समझ नहीं आ रहा मेरे को। आई थिंक इसने भी रिकर्सिव किया। मेरे को आइटरेटिव वाला चाहिए। आइटरेटिव वाला कैसे करते हैं? आई थिंक एक बंदा ने किया था बट वो तो समझ नहीं आया। इन लोग में से कोई तो किया होगा आइटरेटिव का। यहाँ पे लिखा है डी एफ एस क्यू स्टार्ट, सब लिखा है, तो सब मेथड यूज किया गया। फर्स्ट इज रिकर्सिव मेथड डी एफ एस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किया। मजा आएगा। मेरा बैंड बज जाएगा। मैं अभी इसमें आया हूँ, थोड़ा बहुत रुक जा। मैं थोड़ा बहुत इसी उसी करूँगा, उसके बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मैं मीडियम में जंप करूँगा। ट्री वगैरह मैं आज ही स्टार्ट किया हूँ तो पता नहीं था। मीडियम वगैरह निकाला, मेरा दिमाग घूम जाएगा। Code starts with two base cases. If P and Q are null, P and Q, what's P and Q? Okay, P and Q tree. इतना जल्दी भूल गया। चाहिए ट्री। भाई एम्प्टी कैसे हो गया? मैंने तो सॉल्व किया भाई, व्हाट द फक। मेरा सोल्यूशन किधर है? इसका दिख रहा है क्या? If one of the tree is null, then while other is not, cannot be identical. अरे ऐसे भी कर सकते थे ना ग्रुप। भाई मेरा सोल्यूशन कहाँ गया भाई, व्हाट द फक। अरे सोल्यूशन गायब हो गया भाई, ये क्या? अरे नो डेटा, ये क्या हो रहा है? क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ ये? पकड़ा गया है क्या ये? व्हाट द फक ब्रो। भाई लीड कोड वापस लॉग आउट हो गया क्या? अभी 100 में सबमिशन नहीं हुआ ना भाई, मैं कंफर्म कंप्लेंट करूँ भाई? ये क्या है भाई, ये सबमिशन हुआ ही नहीं इसका। ब्रो ये क्या हो रहा है? अरे मैं रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, व्हाट द फक। मेरा मैक्सिमम डेप्थ का गया था, ये कहाँ से आ गया? अभी मैं मैक्सिमम डेप्थ कर रहा था, ये कर रहा था मैं। वो क्वेश्चन कहाँ से खुल गया? छोड़ जाने दो उसको, मीडियम देखते हैं एक बार, वो पता है क्या अपने से। You are given a root of binary search tree. Do not return anything, modify in place. What the fuck? In place करना है, swap करनी है क्या? क्या किया इसने? 3 oh shit, ये तो इसको रिटर्न किया, मैं तो डर गया भाई। 3 can't be in the left of 1 because 3 is greater than 1. Swapping 1 makes the DST valid. Okay, BST. What is BST? BST तो मैंने किया ही नहीं। 2 can't be in the right subtree. ऐसे भी एक रूल होता है ना कि लेफ्ट नोड हमेशा पैरेंट नोड से बड़ा होना चाहिए, तो होता होगा। कॉलेज वगैरह में पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा कुछ होगा। मेरे को रिविजन करना पड़ेगा भाई। एक सब्सक्राइबर कर दो यार कोई, 300 हो जाएगा। लेट्स गो गाइस।
300 करवाओ. चल ब्रो, चलता हूँ. दुआओं में याद रखना. गुड नाइट. ऐसा मोटिवेशन करता है भाई ये रेंज साला. इसको कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है ये? थ्री कांट बी लेफ्ट चाइल्ड of one. Three can't be left child of one. Okay, three can't be left child of one. You're saying that I can't swap this thing here. Because three is greater than one. Swapping. What are the BST rules then? BST bro, BST binary search together. Binary search together. There are some rules like you can't. Yeah, this is what I was looking for. For binary tree to be considered BST, so BST have some sort of rules, I guess. Left subtree rule. For every given node, all the value of the left subtree must be strictly smaller than the node's value. Node is like this thing, right? The first one, and this one can be considered as node. And this is like value, I guess. The right hand side and left hand side is empty. Right subtree, for every given node, all the values in the right subtree must be strictly greater than the node's value. In the right subtree, every node's value must be strictly greater and should be then smaller than the initial. Recursive rule, every left and right subtree must follow rules of the list. Maximum children. Each node can have at most two children. Yeah, that's the reason why its name is binary. Left and right. At most is like you can't have more than two at once. Uniqueness. Traditionally, a BST does not allow duplicate values, though some variations handle them by placing equals in the right or left consistently. Okay, this is not this thing or क्या है? Rule is remove directly one child, replace the node with its child, and two children replace the node in order successor smaller than the same thing. So I need to follow these rules now. The hell are the rules? Where is it? इसको यहाँ पे लेता हूँ, अभी पटकता हूँ सारे. What did he say? Left node should be greater than my node, right? So it's smaller. It should be smaller. Smaller than this. Copy this thing. Paste it. We'll see it. And make the color as white. White is option. White. There we go. Fine enough. Okay, let's go. We got the rules now. Got the rules. The only thing is left, like you have to take the value and swap it. Simple swap, temporary, simple check. But he told me to do it in place. Like, yeah, I can directly swap, I guess. Since we have, what does in place means? I can't even create a variable. In order to swap them, I need a variable. They're telling me to do it in place. Do not return. Modify the root in place instead. But to swap, I need a temporary variable. I never swapped a tree in my life. Let's see how we can swap a tree now.
Okay, what are the rules? Uh, for any given node, all the values in the left subtree must be strictly smaller than its nodes. Left subtree, left subtree should be smaller. The left should be smaller than root node, like something. This is how we are going to remember. And for the right thing, it's opposite thing. Right should be greater than true. That's it. This is what we need to do. And everything else can be swapped, I guess. How do I swap the? Eh, eh, Okay, I think I can. I can derive the solution. If my root return 0 is same. So this is going to be crazy now. We need to swap two things now. We have double node right and right, left right, and inside left also you can have left and right. Here also you can have left. So the rules for left was left should be smaller than right should. Okay, this is the rules. Okay, we need to traverse. We need to traverse on the. How do we do this? Cover tree. We have to traverse on the left. We need to make an execute finite search. 59% of things. Let me see how they are doing this thing. They have a 3 here, and after swap, it's becoming. Oops, it's getting swap till the end, bro. It's not a single swap. Right? See, the one is here. Since left should be smaller than root. Left is smaller than root, and the swap is 5. Damn, too many swaps are happening. I think because the recursive approach, I can think how I come up with a solution. It is not a straightforward. We have in 1 year, and we have 4 years. Right should be greater than the root amount. Fine. And what should be? Left should be smaller than the root. This is not smaller. No. And this is not the smaller than root. Go to the and swap them. Oops. This is some interesting. I think this will take a little time for me. I think solution. Recursive approaches mean that how to traverse through the
Okay, two important things need to be done. We have to traverse through here. And where is the second one? We're having some extra nodes compared to this one. So this thing right now. And here we have this thing. First thing we need to do is like traverse first. First, since we have the root node, we can go to the left, and after left, if we hit the wall, I mean, we go back to 3 itself, and see if if this is smaller than my what do you say that? If this is smaller than my root node, this one, then we don't need to swap since this is improper position, I guess. If they're obeying the rules of the BST, then I don't think we need to swap anything. That's how the solution came up here, I guess. I don't know. So we have 3 here. Since we don't have to swap, we'll just go back here to the 3 and compare with this thing. Is 4 greater than my 3? Yes, it is greater, satisfying this thing. And we come up to the 2 here. Is this smaller than my root node? Yes. Is this smaller than my root? No, it is smaller, but how is this thing got swapped? If this was my root node and its left is supposed to be smaller. Okay, now I understand. For this thing, this is smaller since this is left for this thing. But for this thing, it is right. So right is supposed to be the bigger number. But this was smaller, so they swapped this thing. Get it? So first checking the root is present or not. If not, then step 2, go to the left and check the value is smaller than the node. Step 3, and even we have steps here inside this. If it has the right node inside the left node, then check the right nodes left is smaller than the left right node, and left right node is bigger than right left right node. Same for same thing happens for the right node also. The condition is different, I guess. Only for the left, go to the right, check for the value smaller than the node. For the left side, right, left side. If it has right, left, we understood what it. So, but then I am not sorry this thing. Can't I shrink it? Yeah. Right. दुबई के चॉकलेट दुबई के छायरा खा के देखिए बड़ा मस्त है।
Oh shit, this is pretty big. I'll ask AI to make it smaller. Bro, why the fuck are you doing that? So don't do this. Yes, I'm not. This is clear enough, I guess. Now we have our comments. We have to make prompts to the comments. First we check for the right node. Sorry, root node. Now we have to check for the left. We need a traverse function, right? Oops, everything is inside the comment. I don't need this thing since we have already uh, made a traverse function. And we pass some node here. Values must be smaller than the root. Check the left side. Let do I really need a traverse function? Can't I just do it like in the symmetric way? Since we need a swap, we have to write a swap logic. Print. Let me store the current itself. Current not. First, let's write the logic and then come up the come up with the recursive function and some. This will complete this thing. If we have left side and right side, uh, this thing now we have to compare. If I left side dot val, say val left right side dot val is smaller than my is it smaller than my root? Is smaller than my current dot val. Continue. And if the left side and then left side edges left side dot left dot val, right? Left side dot left dot val are like since tree will be like this root left dot sorry left side dot val is supposed to give the val. How do I access the left side dot val?
It is true. Else you can do uh, chemistry. Let's do it. So, so, there is problem. I think swapping not it's fine. It's swap. Can we write a function? So, so, uh, it's fine. It's fast. So swap and pass the left side of that. And same as what. So, left side of that. Side is there and left side of that. Is lesser than. Sorry, greater than. Oh my god. Left side itself. Will this be my rule? Will it be greater than this? Let's continue. Oh, no, I'm doing some mistake, I guess. If I don't think I can replace an entire left side is supposed to be the whole left side is supposed to be the whole tree itself, I guess, for the left part. Can I can only do the left side but value, which will give me the left side's value. How am I supposed to access the left side's left product? Left side or left value? Left side or left value? If my left side or left value is greater than my left side or value, then what I can do is like swap this thing left side or left or value with the left side value. Only if it is greater than only it will go. And if left side value is greater than my left side value, then obviously left is greater than my parent value. Then parent value in place. I will continue. This thing is fine, I guess. And we even need to write for the right. Oh my god, we have for the right we have the left and also we have the right thing. Continue part, let me go to continue part. Condition I think same right side dot right dot one is smaller than when you swap right starting smaller than I don't know if this thing will work or not, but I'm just
trying to come up with a fucking solution. Here's my left side. If left side is there, so imagine this is my left root node, and does it have the left side dot right dot val? Left side dot right dot val, or doesn't have the right val? Has left val. Is set greater than? Oh, I made a mistake over this. Its left is there, and left side dot left side dot left, not that. Just value of this one greater than my left side dot left. This one, I guess. Everything greater than this one. There's a continue happens in. I don't know. I'm making so much complication. Should be becoming this complicated. I'm making. I have found for the set also. This contributes this thing. Since we don't need the right now. Right side, 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 left side is greater than current continue side on the right side is there, right side is there, and right side on left. Same for the left thing. It's supposed to be the same. Only for the right thing change. And I need to change the video. Oh fuck, I changed for the first one. This is what I was supposed to change. Not that. I don't think this will work. But it's fine. Website dot current value. Website. Sure. I don't know. Road for every conditions. I don't think this will work. Do you have anything else for you? So there can be only right and left, and for them there can be a right and can keep on going till the end, I guess.
But I don't think this can be the solution to this. Maybe in the brute force way, I think it can be the solution. Let me ask for the hint. Are we in the right direction first? Don't give answers. Small ones. Oops. Yeah, understood. Oh shit. Oh shit, I closed it. Fuck. What was this? This is the one. If this was gone, then I would have stopped doing this thing. Okay, yeah, continue convocations. Like we are not inside the loop. Okay, shit. Supposed to go. If they are equal, then it is a beautiful thing on the start. Same for the right. It's running this thing. So it's, yeah. Now we need to write, and it's not working. It won't write. Okay. It's not functioning. Oh shit. Not pretty late. Yeah. So what did I do then? What is this thing?
Let's go. Now only need to fill them. How how's in swap is supposed to be very so the reason is not a bug, small bug anymore. It's over. Swap is dead function. Passing the two wrong nodes can be found. So local fixes will just reset the problem every time. It's not reversible. Checking one step deep. That is hard. I check for the whole thing. Oops. So I have to mark everything. Check there. Change them. Tomorrow then. This thing. Solve it. Yeah, I'm solve it. How do I find should it be here? Yeah. I'll come tomorrow and solve this thing. So I'll learn some piece of history. This is my day.
Bye bye, guys. Take care. Good night. Have